Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today in this video tutorial we are going to talk about reproduction of algae. Today we will talk about the reproduction of algae. Algae में reproduction कैसे होती है? First we will know here about reproduction. What's actually reproduction? Reproduction is a biological process by which new individual organisms, that's offsprings, are produced from their parents. Means these are parents, these produce some offspring. This is known as new body or we can say new plant. ठीक है ना? This is a reproduction actually, means producing of new offsprings or produced from their parents. They are produced from their parents by different methods of reproduction. Is it? No. Reproduction is a fundamental feature of all known life. Each individual organism exists as the result of reproduction. Means reproduction is important for every individual, living individual, to produce its progeny ahead और इसकी जो अपनी जनरेशन है उसे कंटिन्यू करने. Three types of reproduction is found in algae. How much? Three types. The first one is vegetative, another one is asexual, third one is sexual. Is it? How many types of reproduction is found in algae? There is three types of reproduction in algae. That's vegetative, asexual and sexual. Now let's talk about vegetative reproduction. What? Vegetative reproduction. As we earlier see, there are three types of reproduction in alga and vegetative is one among them. Let's talk about what's vegetative reproduction. Suppose, my dears, this algae, suppose what happens here, part, suppose this part gets detached here. This part gets detached here due to any reason. We will see all those methods how they get detached, and when they this part get detached and this part will start forming here new body. This is actually vegetative reproduction. Let's see what's here. The vegetative reproduction in alga includes those methods of propagation in which portion of plant body becomes separated or detached off to give rise new individual. Vegetative reproduction takes place by different methods. So reproduction, this part of reproduction has different parts. We will see them one by one. Let's start here the first part of vegetative reproduction, that's this by cell division. This is a simple, quite simple type of reproduction. What happens here, suppose this is a cell, this is a mother cell. This mother cell shows start dividing, it start dividing and it forms different segments. यहाँ पर different segments बनेंगे and one of these segments transfer here and form a new body. This is actually what? This is a cell division. The mother cell divides and the daughter cells are produced. Here, as I say, mother cell divides and new plant bodies will be produced. It's sometimes known as binary fission also. Remember this type of reproduction is also known as binary fission sometimes. Is it? Binary fission means two divisions occur here by fission, that's divide. This type of reproduction is found in diatoms and euglena. Is it? Let's see, here is a picture by which you can clearly understand this. This is actually cell and यहाँ पर इसके ये जो आपको दिख रहे हैं, this is a dividing cell. This is a part of this dividing cell. Is it? And now this is mother cell and this part will form new body. Is it? Now let's start second part. Second is fragmentation. What's fragmentation? Plant body breaks into several parts or fragments and each fragment develop into a new individual. मतलब ये बता रहा है, suppose it's a plant body, this occurs mostly in filaments. जो filaments alga होते हैं, filaments algae most shows this type of reproduction. Means here fragment is formed here, this will cut off here. जब ये cut होगा यहाँ से, so this that's transfer into new plant.
ये न्यू एल्गी का ये जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमनली मेट विद इन फिलामेंटस फॉर्म। एग्जांपल इज यूलोथ्रेक्स, स्पाइरो, गायरा। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉलोनीज, समटाइम्स जो कॉलोनीज एल्गी बनाते हैं, जैसे हमें उनमें पढ़ा है पेंडोरॉन, यूडोरॉन, उनकी ये जो कॉलोनीज होती हैं, ठीक है ना, और नॉस्टॉक, वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना। Several blue green algae like Aptenotheca and nostoc. Is it? Now let's see here. This is a picture. You can clearly understand. This is a filament. This is one filament, and this is a nucleus. This is a septa. That's this here is a septa, and this septa is showing here clearly. यहाँ पर cut हो गया है, fragments हो गए हैं, and different fragments होते हैं, and these fragments transfer into न्यू बॉडी, ठीक है ना। एंड दिस इज द फ्रेगमेंटेशन। चलो अब हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, दैट्स दिस हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। हार्मोगोनिया फॉर्मेशन होती है लाइक अगर आपने देखी हो नॉस्टॉक कॉलोनी जो होती हैं, उसमें ये जो ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है ना। ट्राइकोम आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा। दिस ट्राइकोम अपीयर्स समहाउ लाइक दिस, ठीक है ना। इस ट्राइकोम में क्या होगा, यहाँ पर इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? breaking will occur here. How the breaking will occur? Breaking will occur here due to some reasons. The first reason is heterocyst formation. heterocyst यहाँ पर बन जाएगा। हमें पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेशलाइज्ड सेल हैं ये, ठीक है ना, एंड टू फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। दिस heterocyst formation occurs here and this trichome will break down. This is the first. Second reason is यहाँ पर क्या होगा, स्पेशलाइज्ड डिस्क बन जाएगी यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं नेक्रोइडिया इज अ स्पेशलाइज्ड डिस्क। दिस स्पेशलाइज्ड डिस्क विल फॉर्म हियर एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा एंड यहाँ पर ट्राइकोम की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और द थर्ड रीजन इज डेथ और डिके। Death or decay of intercalary cell means this is intercalary cell. इस intercalary cell की यहाँ पर death और decay हो जाएगी किसी भी रीजन से, and this part when separated here and it will transfer into a new algae, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप लिखा भी है, when the trichome breaks in a small piece of 2 or more cells, such pieces are hormogonia, ठीक है ना। यही हार्मोगोनिया है। इन ब्लू ग्रीन अलगा क्या होता है, साइनोफाइसी में फ्रैगमेंट्स अंडरगो ए ग्लाइडिंग मूवमेंट व्हिच आर कॉल्ड हार्मोगोनिया। दिस फ्रैगमेंट्स जब यहाँ पर बनेंगे फिर कट हो जाएंगे, फिर ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स दिखाएंगे जिसकी वजह से न्यू बॉडी बनाएंगे। ईच हार्मोगोनिया डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। ये भी यहाँ पर ये जो हार्मोगोनिया अब निकलेगा, ये जो पार्ट डिटैच हो जाता है इसी को हम कहते हैं हार्मोगोनिया, ठीक है ना। ये डिटैच पार्ट जो होता है दैट्स दिस, इसको हम कहते हैं हार्मोगोनिया। इसकी एग्जांपल है ऑस्कुलेटोरिया एंड नॉस्टॉक, इज टू एग्जांपल्स। यहाँ पर अगर आप देखो एंड यहाँ पर जो आपको दिख रही है जिसे नॉस्टॉक, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल बनी है, यही सेल है हार्मोगोनिया, ठीक है ना। अब यही सेल जब यहाँ पर इन रीजन की वजह से अलग हो जाएगी एंड ये बनाएगी न्यू बॉडी, ठीक है ना। Now let's study the fourth part, that's hormospore. Hormospores are hormocyst. क्या है हार्मोस्पोर और हार्मोसिस्ट? क्या है? Such multicellular spore-like structure function as a perinating body called hormospore or hormocyst. क्या होता है? Sometimes जैसे अगर हम फिर देखें, अगर हम एग्जांपल लें किसकी, ब्लू ग्रीन अलगा की, अगर हम किसी भी एग्जांपल नॉस्टा की अगर हम एग्जांपल लें, क्या होता है यहाँ पर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। यहाँ पर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब क्या है इनका स्पेशल फीचर, क्या है इन स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स का? दीज स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर थिक वॉल्ड, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन they can overcome the period of desiccation, मीन्स क्या है, ये जो पीरियड है डेसिकेशन का ये ओवरकम कर सकते हैं ड्यू टू दिस थिक वॉल्ड सेल, ठीक है ना। एंड इनमें फूड रिजर्व मटेरियल भी होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज प्रीनेटिंग बॉडीज, ठीक है ना।
पिरिनेटिंग बॉडीज हम इनको तभी कहते हैं जब इनकी थिक वॉल्ड होती हैं और इनके पास बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल्स होते हैं. ड्यू टू दिस रीजन दे कैन ओवरकम दिस पीरियड ऑफ डेसिकेशन और अनफेवरेबल कंडीशन पीरियड ये अपना स्किप कर सकती हैं. ठीक है ना. दीज टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज नोन एज हार्मोस्पोर्स और हार्मोसिस्ट्स. दे आर थिक वॉल्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया, एंड प्रोड्यूस्ड इन सम ड्रायर कंडीशंस में, ये भी मैंने पहले ही बताया, जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो और दैट्स पीरियड ऑफ डेसिकेशन चल रहा हो. ठीक है ना. नाउ स्टडी ट्यूबर्स. ट्यूबर्स इज अनदर फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. क्या होता है ट्यूबर्स में? यूजुअली दीज बॉडीज आर राउंडेड and filled up with abundance of starch. मीन्स स्टार्च जो प्लांट्स में फूड रिजर्व होता है मोस्टली. ठीक है ना. यही इन में जो ट्यूबर्स बनते हैं. ठीक है ना. ट्यूब बनते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, दैट्स नोन एज ट्यूबर्स, एंड these tubers are rich in starch, due to which starch they can live their own. ठीक है ना. they can live their own. Is it? How they can live their own? By due to this starch. ठीक है ना. Each body may give rise to a new plant, and when this plant body gets agitated, and it will start to form a new body. ठीक है ना. ये न्यू बॉडी फिर बनाएगी. एग्जाम्पल है इसकी कैरा. ठीक है ना. दिस इज ट्यूबर्स. Now let's move here another part, that's another type of reproduction, that's adventitious thalli. ठीक है ना. अब ये क्या कौन सी टाइप है रिप्रोडक्शन की? certain special structures of thalli are formed with the which help in vegetative reproduction. means thalli जो ये thalli होता है, suppose these are thalli are formed which help in vegetative reproduction. ठीक है ना. यहाँ पर आप specialized कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर्स. These special structures will help to form new algae. ठीक है ना. इसकी वजह से न्यू algae बनेगी. The well-known propagule of bryopsis are good example. ठीक है ना. ये जो यहाँ पर है, अगर आप देखो bryopsis की एग्जाम्पल अगर आप देखो, this is good example of this adventitious type of thalli. ठीक है ना. Now let's talk about the another type of vegetative reproduction, that's akinets. Some authors consider this is as a asexual. Remember it, asexual reproduction. Some authors consider this type of reproduction, that's akinets, is asexual reproduction. That's whatever it will be. Let's talk about akinete, what actually it is. akinete में क्या होता है actually? Suppose this is algae. इस algae में क्या होगा? ठीक है ना. Now my dear, let's talk about the another part of vegetative reproduction, that's bulbils. ठीक है ना. Bulbils is another form of vegetative reproduction. So what happens here in this type of reproduction? This type of reproduction is mostly found in Chara. What happens in actually Chara? Suppose this is a Chara, and यहाँ पर इसका ये जो thalli है, this thalli develops here a bud-like structure, that's known as bulbil. Bud-like structure, इस bud-like structure को हम कहते हैं bulbil. This is actually bud-like structure, that's why it's known as bulbil. And this bulbil develops at the place of resides. Where it develops? It develops at the place of resides. And now this bulbil gets detached and form new algae. ठीक है ना. ये क्या बनाएगा? न्यू algae. वही यहाँ पर लिखा है, small bud like structures usually develop on the resides, that's as I already told you here, is resides of Chara are called bulbils. Each such bulbil may develop into a new plant. फिर इस bulbil को क्षमता होती है that it can develop into a new algae. Here is picture, you can clearly see. Suppose this is a Chara thalli, and in this on this thalli here is formation of this bulbil. Is it? This is bulbil, and this bulbil will transform into a new body. Is it? And this was bulbil. ये एल्गी है. इस एल्गी की कोई भी वेजिटेटिव सेल जो होगी, कौन सी? वेजिटेटिव सेल ट्रांसफर इनटू
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, किसमें, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं। एंड इस सेल को क्या होता है, इट्स थिक वॉल्ड एंड with that's abundance of reserve food materials। क्या होगा, इस एल्गी की कोई भी वेजिटेटिव सेल जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और ये सेल के फीचर्स क्या है, इट्स थिक वॉल्ड एंड abundance of reserve food material, and due to this thick wall and reserve food material, this algae can overcome unfavorable conditions, ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशंस को ये स्किप कर सकती हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज मोस्टली फाउंड इन ब्लू ग्रीन as well as green algae, sometimes they are formed in chains, sometimes ये क्या बनती हैं, ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स चेन्स में भी बनती हैं, ठीक है ना। as you can see here clearly on screen, suppose this is akinete, ठीक है ना, ये सेल क्या है, akinete में चेंज हो गई है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर अगर आपको देखें हेटेरोसिस्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको इसके मुताबिक बताऊं, दिस akinete मोस्टली फॉर्म्स इन that's intercalary, position of this akinete is intercalary, ये intercalary में। and another point about this akinete is each akinete may develop into a new plant, akinete जो भी बनती है यहाँ पर, इस akinete की क्षमता होती है, this akinete can transfer into a new plant, ठीक है ना, न्यू प्लांट डेवलप कर सकती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोस्टली फाउंड इन यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम एटसेट्रा। Now let's study more about the vegetative reproduction. Here is another type, that is adventitious branches. Adventitious branches are formed in some thalide forms of algae. जो thalide forms algae होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर मोस्टली ऐसे हो, that's thalide type, इनमें क्या होगा, adventitious branches are formed, ठीक है ना। adventitious, this is adventitious branches. These branches when get detached, जब ये यहाँ से डिटेच हो जाएगी, सपोज यहाँ से अलग हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना, फ्रॉम द थैलस डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, जब ये थैलस से डिटेच हो जाएगी देन इट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। एडवेंटिशियस, another point about the adventitious branches is adventitious branches like protonema formed on the internodes of Cara. Suppose ये कैरा का थैलस है, ठीक है ना। अब क्या होगा, प्रोटोनीमा, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट्स प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा इज थ्रेड लाइक chain of cells that forms the earliest stage of development of gametophyte। क्या होता है, दिस प्रोटोनीमा इज थ्रेड लाइक chain of cells that forms the earliest stage of, and this protonema is represented as the earliest stage of gametophyte, यही बनता है on the internodes of Cara, ठीक है ना। and this protonema can develop into a new plant as well. Example of it is Dictyon and Ficus. Here is example like this picture. This is suppose here long adventitious branch, यहाँ पर एडवेंटिशियस ब्रांच बनी है लॉन्ग, ठीक है ना। ये किस में बनी है, ये फिकस की स्पीशीज है। दिस इज शॉर्ट एडवेंटिशियस ब्रांच हियर, ठीक है ना। नाउ दिस ब्रांच कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। Now let's talk about now second part of reproduction that's found in algae, that is asexual reproduction. What's asexual reproduction? Remember simply it's a reproduction where gametes are absent, ठीक है ना, gametes are absent, ठीक है ना। This is asexual reproduction. So what's here? Asexual reproduction is a mode of reproduction by which offspring arise from a single organism and inherit the genes of the parent only. यहाँ पर ये जो offspring बनेगा from parents, ठीक है ना, इनके पास सिर्फ अपने parents के ही ये जो genes होंगे, ठीक है ना। It is reproduction which most never involves
पोलाइडी और रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन और पोलाइडी नहीं होती है। व्हाट्स पोलाइडी? इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल। हियर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एब्सेंट, ठीक है ना। दिस इज नोन एज पोलाइडी। What is polarity? It's a number of complete set of chromosomes which is absent here, or reduction division, that is meiosis, which also absent. The offspring will be the exact genetic copies of the parent except the specific. यहाँ पर ये जो offspring बनेगा ये तो gamete से पहले ही नहीं बनता है, फिर ये जो offspring बनेगा from parent से offspring, it will be like that is parents, ठीक है ना। ये पेरेंट का कॉपी होगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट ऑटोमिक्सिस, जहां पर ऑटोमिक्सिस में कभी दूसरे के जो कुछ जीनस वीनस इन्वॉल्व हो जाए, और समटाइम्स दैट इज म्यूटेशन दैट्स एक्सेप्शनल केस। A more stringent definition is agamogenesis. Agamogenesis is actually without fusion of gametes. Agamogenesis is actually without fusion of gametes. यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। क्या होता है फिर यहाँ पर? यूजुअली द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल डिवाइड। सपोज दिस इज सेल एंड दिस इज प्रोटोप्लास्ट। दिस प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स, ठीक है ना, इनटू सेवरल प्रोटोप्लास्ट एंड देयर आफ्टर दे एस्केप फ्रॉम द मदर सेल। मींस व्हेन these protoplasts of the cell divides into multiple, that's protoplasts, and hence they escape here and develop into a new plant, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा फिर? न्यू प्लांट। Asexual reproduction is primary form of reproduction for single celled organism. This asexual reproduction is mostly found in, that is जो single celled organisms होते हैं, ठीक है ना। Example is Archaebacteria, Eubacteria and Protists, ठीक है ना। This is asexual reproduction. But except these organisms, there is many plants and fungi which can reproduce asexually. Asexual reproduction takes place by variety of spore formed different alga, they are include. Asexual reproductions के जो different types हैं वो हम अब देखते हैं। Now let's start the first type of asexual reproduction, that's zoospores. What is zoospore? As the zoo indicates, it's living, means motile, and spore means spore, ठीक है ना। यहाँ पर जूस्पोर्स बनेंगे। जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम certain older cells of filament. Suppose this is a filament and suppose this cell is here, this is old cell. क्या है ये? old cell. इस old cell का ये जो cytoplasm है, this cytoplasm will divides and it will divides into many segments and form zoospores. यहाँ पर ये जो बनेंगे इनको हम कहते हैं zoospores, and these zoospores now escape from the mother cell. mother cell से ये escape हो जाएंगे, ठीक है ना। when they escape they forms a new plant, ठीक है ना। but important points, these spores are motile, these are flagellated spores, they always form in favorable condition. The criteria here for the formation of zoospores is that conditions will be favorable, optimum conditions should be available. The zoospores are always motile, the zoospores are always motile, as I already told you. Here is this, that is picture. These are zoospores which are escaped from these mother cell. This is mother cell and these are zoospores. These are escaped from mother cell and now try to form into a new plant body. The zoospores are naked protoplasmic bodies which move by means of flagella or cilia. Cilia या flagella होता है इनमें, but this is pertinent to mention here that these zoospores are naked. These are mostly, they lack cell wall, these are naked. They may be biflagellated, tetraflagellated or compound zoospores, means flagella can be multiple numbers of here. Number of flagella can vary. Example is Wucheriaceae or Odogoniales. Is it? Let's talk about the second part of asexual reproduction, that's aplanospores. What's aplanospore? जैसे आपने अभी पढ़ा zoospores. Suppose this is zoospore and remove this flagella and this body will turn into aplanospore. So आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, aplanospores they are when the motile phase of zoospore is eliminated, ठीक है ना। जब ये flagella यहाँ से eliminate हो जाते हैं, these bodies are now called aplanospores. The aplanospores are produced when there is lack of sufficient water. मैंने आपको पहले बताया था zoospore बनाने के लिए conditions जो होनी चाहिए थी वो favorable थी,
ठीक है ना, means everything will be available easily. But now when there is no sufficient water when is absent, so उस वक्त क्या होगा, this flagella will be eliminated here and these zoospores will transform into aplanospores. These are covered by a thin wall but not possess flagella like spores. यहाँ पर अगर आपने देखा था जूस्पोर्स में जो वॉल थी वो थिक थी, लेकिन यहाँ पर ये जो वॉल है दैट्स थिन, दिस वॉल इज हियर थिन, ठीक है ना. They also germinate directly to give rise to a new plant. These aplanospore when get eliminated and they germinate and form new body. Here is example, you can clearly see this is a parent and this is a aplanospore. This is non-motile and when it forms when there is no sufficient water, is it? Now let's talk about third part of asexual reproduction, that is by hypnospores. What's hypnospore? ठीक है ना, जब आपने जूस्पोर्स देखा उनमें से फ्लैजला निकल जाता था, वो क्या बन जाते थे, वो बन जाते थे एप्लानोस्पोर्स. Now aplanospores was non-motile and there was single, that's thin cell layer, thin cell wall, ठीक है ना. अब यहां पर क्या होगा, हाइपनोस्पोर भी सपोज आप मान लो दिस इज एप्लानोस्पोर, इस एप्लानोस्पोर की जब थिक वॉल प्रोड्यूस हो जाएगी, व्हेन देयर इज डेवलप अ थिक वॉल, दैट्स थिक वॉल, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एप्लानोस्पोर्स. तो क्या है हाइपनोस्पोर, एक्चुअली दे आर वेरी थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर, मींस एप्लानोस्पोर जो थे उनमें थिन वॉल थी, ठीक है ना. नाउ हियर इज थिक वॉल एंड डेवलप इन एडवर्स कंडीशन, वहां पर भी एडवर्स कंडीशन थी बट हियर इज सम मोर एडवर्स, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एडवर्स कंडीशन है देन एप्लानोस्पोर्स. इन कंपैरेटिवली ड्रायर सिचुएशन द कंटेंट ऑफ मदर सेल राउंड ऑफ एंड सीक्रेट अ थिन वॉल अराउंड देम टू टाइड वर द अनफेवरेबल कंडीशन. मींस यहाँ पर क्या होता है, दिस सेल राउंड ऑफ, ठीक है ना, ये बहुत सारे चक्कर लगाती हैं एंड डेवलप्स अ न्यू और सीक्रेट्स अ न्यू थिक वॉल, ये थिक वॉल secrete करेगी. Now this thick wall will protect this hypnospore during unfavorable conditions, that's in the period of desiccation, is it? These thick wall structures called resting spores or hypnospore. These structures are known as that's which form here, which secrete thick wall around it. These are known as resting spores or hypnospore. Why we call them resting spores? Because they do not germinate in these adverse conditions. In unfavorable conditions में ये germinate नहीं होते हैं and they remain at resting period. That's why they are also known as resting spores. This is example here, hypnospore. If you clearly seen, there is a, that's this layer here, this is a thick wall around which protect them during unfavorable condition. And sometimes what happen, sometimes the entire cell as such become thick wall to form akinete. That's why I told you already, some authors consider akinete as a asexual type of reproduction. क्योंकि जब entire cell, suppose this is now hypnospore, जब इस hypnospore में आधे कोई यहाँ तक thick wall थी, it was known as hypnospore. When this thick wall develops to whole body, that's around whole cell, now this can sometimes be also known as akinete, ठीक है ना. And this is this point. They are usually produced at the approach of dry or hot weather. As I already told, they are produced during unfavorable conditions. On the approach of favorable conditions, they germinate directly to produce new plant or form zoospores. क्या होता है, when the favorable conditions went back, ठीक है ना, जब favorable conditions वापस आ जाती हैं तो क्या होता है, they form flagella again, ठीक है ना, इनमें फिर से flagella आ जाता है and they germinate to form new body. Example of this type of is here, that is pedistrum and vecheria. Now let's talk about palmilla stage. This is very important as far as your exam is concerned. So what happens there, the approach of dryness, as when the plants are left on the moist banks by receding water of the ponds, the cell of many algae continue to divide but their contents are not liberated. Means जब भी कभी
by due to water currents, some algae reach on the that's moist banks. So what happens when these algae reach on the moist banks? There is also a dryness. Means lot of favorable conditions we can say. And now this algae start dividing here. ठीक है ना? Now this algae divides its protoplasts. When it divides its protoplast, this protoplast means जो divide हुआ है यहाँ पर, it's not liberated. It's not liberate. ये liberate नहीं होता है. Why it's not liberated? Because this mother cell develops here a gelatinous wall. ठीक है ना? Around it develops a this mother cell develops a gelatinous wall around it. Gelatinous wall around it or around its colony and form a jelly-like substance. Oh, sorry, or embedded in a jelly-like substance. This gelatinous sheet is or jelly-like. ठीक है ना? इसके अंदर ये embedded रहती हैं. ठीक है ना? The mother wall becomes gelatinous, thus forming a mass or colony rounded cells which lie embedded in a jelly like substance formed from the cell wall. जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर jelly like structure बनेगा, that's gelatinous substance secrete होगा यहाँ पर, and this content will remain, that's divided content will remain inside this that's round colony. Here is example by which you can simply understand. Suppose this is palmilla stage and this is gelatinous that's layer और jelly substance जो है ये लेयर है वही, एंड देयर इज डिवाइडेड प्रोटोप्लास्ट. ठीक है ना? ये क्या है? डिवाइडेड प्रोटोप्लास्ट. इज इट? Another point about it is that is on return of favorable conditions, the cell come out either as zoospore or a planospore. अब क्या होगा? When the favorable conditions came back again, then these that is divided fragments will come out from the cell and develop as zoospores. That's flagella होगा इनके पास. अगर फिर भी थोड़ी सी unfavorable condition हो, then it develops into a planospore. ठीक है ना? On germination they will produce when these zoospores or planospores germinate होंगे तो produce करेंगे new body. Is it? Example of it is that is these Eulothrix. Now let's talk another type of asexual reproduction, that's autospore. What's autospore? They are just like aplanospore. What was aplanospore? These were non-motile and thick-walled. Is it? Aplanospores were non-motile and thick-walled. Means these autospores are also like aplanospore, except they are smaller in size. These aplanospores were larger in size, and these autospores are smaller in size. इनका size जो है small होगा. They resemble in shape to mother cell except in size. Means these autospores when formed they are exact copies of mother cell. ठीक है ना? Except in size. Variation is here in case of size. That size is varied. Each autospore give rise to a new spore. When the multiple autospores develop here, these autospores develop into a new plants. Such autospores are reported from many chlorococcales. That is chlorococcales में अगर आप देखें like Scandasmus, अगर आप इसमें देखें this is a species of chlorococcales. So this is mostly found in autospores. Here is this picture, you can clearly see here is autospores. यहाँ पर autospore बने हैं. Suppose this is autospore, smaller in size. यहाँ पर अगर आप mother cell देखो, it's larger in size. Is it? This is a difference between autospores and aplanospores. Now let's talk about another type of that's asexual reproduction, that's endospore. What's endospore? In many blue-green algae and Bacilophyceae, endospores are formed within the cell. Remember, it's endo means inside. As endo indicates, endo means inside. Is it? Means this is cell. This cell increases its size. When the size of the cell increases and it forms here, that is, it divides and forms new spores here. Is it? And the size of the cell increase. Size क्या होगा? Increase होगा. ठीक है ना? And ये जो इसके अंदर spores बने, these spores are formed inside. ठीक है ना? And this cell now behaves like sporangium.
What sporangium? Sporangium is a structure in which spores are produced. Is it also this cell also acts like a sporangium because spores are produced here inside, and these spores remain inside the cell. That's why it's known as endospore. On the approach of favorable conditions, each endospore develops into a new individual. अब जब favorable condition back हो जाएंगे तो क्या होगा? These spores develop into a new plants. ठीक है ना, ये new plant develop करेगी. ऐसे ही exospores हैं. एक्सोस्पोर्स क्या होते हैं? दैट्स आउटसाइड जो बनते हैं. दैट इसी तरह सेल का साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. बट दिस सेल रैप्चर्स, सपोज हियर, यहां से फिर ये स्पोर बाहर आ जाएंगे एंड दीज स्पोर्स आर नोन एज एक्सोस्पोर्स. ठीक है ना. यहां पर अगर आप देखो, दिस इज एंडोस्पोर्स हियर, इज इट? ठीक है ना. एंडो, दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एंडोस्पोर्स. Now let's study another type of asexual reproduction, that's cysts. हमें तो पता है cyst क्या है. These are thick-walled spores formed during the unfavorable conditions or even when food is supply is abundant. ये both conditions में बनते हैं, जब conditions unfavorable हो और जब abundant food हो. ठीक है ना. abundant food या unfavorable condition हो, that time cysts are formed. इसमें बनते हैं ज्यादातर. इट्स मोस्टली फाउंड इन वैचेरिया. अगर आप देखो क्या होता है, ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन एज इन वैचेरिया द थैलस बिकम्स मिनी सेप्टेट, मिनी सेप्टा. सपोज दिस इज थैलस एंड इट फॉर्म्स मिनी सेप्टास. ठीक है ना. थैलस के क्या हो जाते हैं? मिनी सेप्टास हो जाते हैं. एंड ईच चेंबर दस फॉर्म्ड प्रोड्यूस अ थिक वॉल्ड सिस्ट. अब ये जो चेंबर बन जाएगा, दिस चेंबर विल प्रोड्यूस थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ. ठीक है ना. क्या प्रोड्यूस करेंगे? सिस्ट अराउंड इटसेल्फ. यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज सिस्ट, सपोज दिस इज वैचेरिया, दिस इज थैलस ऑफ वैचेरिया हियर, एंड हियर यू कैन सी द सिस्ट्स आर फॉर्म्ड हियर. ठीक है ना. Another point about the cyst is sometimes cysts many be formed in rhizoids as in Botrodium when they are called rhizocysts. Suppose क्या है, जो rhizoids होते हैं किसके? That is this Botrodium के जो rhizoids होते हैं. Suppose this is rhizoid of Botrodium. ठीक है ना. इस rhizoid पे क्या होगा? कभी cysts बन जाएंगे and these cysts are known as, that is rhizocysts. ने हम क्या कहते हैं? These are known as rhizocysts. ठीक है. Sometimes what happen? A cyst may divide further to form number of microcysts. Suppose इस यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये जो cyst बना था इसके rhizoid के ऊपर, that's rhizocyst. This cyst will now divides into multiple fragments and each fragment will develop into a new microcyst. Is it? Now let's talk about the sexual reproduction. That's third type of reproduction in alga. The first fossilized evidence of sexual reproductions in eukaryotes is from the Stanian period. जो Stanian period है वहां पर हमें इनका फॉसिल मिलता है sexual reproduction in, that's around 1.2 billion years ago. These reasons include fighting accumulation, deleterious mutation, increasing the rate of adaptation to changing environments, dealing with the competition, or as an adaptation for repairing DNA and masking deleterious mutations. Means simply that the sexual reproductions have many advantages over population. Why? It includes us to fight against these deleterious mutations. It increases the rate of adaptation to the changing of environment. जब environment change होता है, so we can cope up with the environment, changing environment. और हम जो multiple mutation develop करते हैं उनकी वजह से हमें different types of fruit varieties मिलती हैं और other types of animals we can also develop. So these are the some beneficial points regarding the sexual reproduction. Also, while these ideas about why sexual reproduction has been maintained or generally supported, the ultimate size of the population determines if sexual reproduction is entirely beneficial. और इससे हमें ये क्या पता चलता है? Sexual reproduction is entirely beneficial. इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया
एंड इसके से क्या होता है, पॉपुलेशन का ये जो साइज है वो ज्यादातर मेंटेन भी रह सकता है। लार्ज पॉपुलेशन अपीयर टू रेस्पॉन्ड मोर क्विकली टू द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन द स्मॉलर पॉपुलेशन। जो लार्ज पॉपुलेशन होती है और जो लार्जर स्पीशीज होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं, these can obtain their benefits through from the environments quickly than the populations which can reproduce through the other modes of reproduction, that's asexual or vegetative type of reproduction. The basic advantage of the sexual reproduction is slow reproducing complex organisms. The basic benefit is regarding that it is slow reproducing. What is slow reproducing? As हमने देखा था स्पोर जो बनते थे मल्टीपल बनते थे, फ्रेगमेंटेशन मल्टीपल होते थे, लाइक दीज एसेक्सुअल सेक्सुअल सिस्ट मल्टीपल टाइम एक दरख्त प्रोड्यूस कर सकता था। सो उसकी वजह से क्या हो सकता था, पॉपुलेशन कैन बी इंक्रीज्ड और कैन बी डिलीटेरियस इन द प्लैनेट अर्थ। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, द पॉपुलेशन साइज कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, ठीक है ना, एग्जिबिटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड गिवन स्पीशीज, ठीक है ना, particularly survival strategies that they employ. Is it? It is greatly advanced method of reproduction, as I already told you. Conditions for sexual reproduction, there is some condition. The first condition is it takes place after the considerable accumulation of food, means there should be the good conditions of environment, there should be a good facilities of food all over the around the species, and there also should be the bright light, and that's the for that is good for the production of gametes. Also the pH should be normal, and the optimum temperature is also necessary. Now this sexual reproduction is of three types. That's first one is isogamy, second one is heterogamy, and third is aplanogamy or conjugation. Let's talk about the first. What's isogamy? As iso indicates here, its means same, that's morphous. Gamy means gametes. The fusion of similar motile gametes is found in many species. Isogamy means that is same type of gametes, that is gametes which are morphologically same. Morphologically gametes same होंगे. Also these gametes have motility with the help of this motility is with the help of that is this flagella. ठीक है ना? Usually the gametes taking part in the fusion come from the two different individuals. यहाँ पर ये जो gametes होंगे ये दो different species से आए होंगे, that is plus and minus. But here is to differentiate male and female very difficult and impossible task. Why it's impossible? Because it's isogamous type. Isogamous means these gametes are morphologically very same in appearance. That's why. Is it fusion? Usually the gametes taking part in the fusion come from the different individuals of the filament. Sometimes the gametes can be two different or the same filaments. ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये gametes हो सकते हैं different parents के भी हो सकते हैं, और sometimes एक ही filament के gamete भी हो सकते हैं, and they are different, impossible to differentiate, that's tough to differentiate into positive and negative, that's male and female. Here you can clearly see on the screen isogamous type. This is the flagella which help in motility, and this is the positive, that's male, and this is the female gamete, and they are equal in size. Another point regarding the isogamy is that is although in some species there are more than two mating types, means the mating types can be in isogamous species is more than one से ज़्यादा भी हो सकते हैं, sorry more than two, ठीक है ना, two से ज़्यादा भी हो सकते हैं mating types. The fertilization occurs when the gametes of two different mating types choose to form zygote. क्या होगा जब यहाँ पर two different zygote that is combine होंगे, that's fertilize होंगे, they form zygote. Is it? Another type of sexual reproduction is that heterogamy. As hetero indicates here, that's different. Hetero means different. Gamy means different types of gametes. The fusion of dissimilar gametes, that's amorphous gametes, occur here. It's of the two types, that's anisogamy and oogamy. Let's talk about first, that is anisogamy. Anisogamy means the fusing gametes are similar in appearance. यहाँ पर जो fusing gametes होंगे, these are similar in appearance and are motile but different in physiologically or in size, means they are same in that is genetically,
जेनेटिकली दे आर सेम बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। फिजियोलॉजिकली इनकी अपीयरेंस जो होगी डिफरेंट होगी। बाकी ये इसमें सेम होगा, दैट्स मोटिलिटी होगी एंड दैट फ्यूजिंग गेमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस। ठीक है ना, सिर्फ इनके जो डिफरेंट फिजियोलॉजी होगी और इनके साइज में डिफरेंट होगी, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। स्मॉलर गेमेट इज कंसिडर्ड टू बी द मेल, ये इसको हम मेल गेमेट बताएंगे जो ये स्मॉलर होगा, एंड लार्जर विल बी कंसिडर फीमेल। ठीक है ना, इसको हम फीमेल। Here we can give them also to simply name that this is also known as macrogamete. This is known as microgamete. Is it? Another point is that this picture also indicates that this is female gamete, that's minus type, and this is positive type of strain. Is it? That's male. There are several types of anisogamy. Both gametes may be flagellated and thus motile. There are different types of anisogamy. Means sometimes both the gametes can be flagellated. Means ये gamete भी जो positive भी and negative भी क्या होगा, flagella इनके पास होगा. Thus they are motile. Sometimes they neither have flagellas. That's ना ना इसके पास flagella होंगे ना इसके पास flagella होंगे। ठीक है ना। Another point, this situation occurs for example in some algae and plants. ये situation both हो सकती है, plants में भी algae में भी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर आप देखो, पॉलीसिफिहोन large non-motile egg cells are fertilized by small non-motile spermati. Spermati that is male gamete, ये फर्टाइल करता है किसे, दैट इज नॉन मोटाइल जो होता है फीमेल का एग जो होता है उसे ये फर्टाइल करेगा। ठीक है ना, किस स्पीशीज में ये पाया जाता है, मोस्टली इन पॉलीसिफियम। लेट्स टॉक अनदर टाइप, दैट्स oogamie. Oogamie, that's very conspicuous type is this is very famous type of reproduction, oogamie. What happens in this type, that's male gamete which is known as antherozoid. Male gamete को हम क्या बताते हैं, antherozoid, fused with female gamete. किसके साथ ये गेमेट होगा, फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज होगा। ठीक है ना। द फ्यूजिंग गेमेट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड बिहेवियर। ये जो फ्यूजिंग गेमेट्स होंगे इनका साइज भी डिफरेंट होगा एंड बिहेवियर जो इनका फ्यूजिंग का है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है ना। मीन्स वन ऑफ द गेमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, एक गेमेट इनमें से स्मॉल होगा मोटाइल होगा। सपोज दिस गेमेट इज स्मॉल मोटाइल, ठीक है ना, मोटाइल है स्मॉल है। ठीक है ना, ये किसका होगा, दिस टाइप, दिस इज मोस्टली फाउंड इन मेल्स। अनदर विल बी लार्ज एंड दैट इज नॉन मोटाइल। ठीक है ना, ये किन में होगा, दैट इज फीमेल्स, ये मोस्टली मेल्स में होगा। ठीक है ना। नाउ यहाँ पर अगर आप oogamie का स्ट्रक्चर देखें, दैट दिस इज एग लार्जर टाइप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज फाउंड इन females, and this is sperm smaller type, and this is motile, and this is found in males. Another point is that this type of sexual reproduction is termed as fertilization or oogamous reproduction, and the product is called oospore. जो इस reproduction का product होगा यहाँ पर, इसको हम बताएंगे oospore. Product of this reproduction type of oogamous type of reproduction is known as oospore. Remember, this is important time and it can be asked. This is usually found in higher types of green and brown algae. Mostly plants में भी पाई जाती हैं, यहाँ पर भी higher algae में देखने को मिलती हैं, that's Vachyria and Chara. Now let's talk about the last type of sexual reproduction, that's aplanogamy or conjugation. What's aplanogamy? It implies the fusion of two non-flagellated gametes. Means यहाँ पर जो gamete होंगे, these gametes must be non-flagellated. इनके पास flagella नहीं होगा, flagella absent होगा, but क्या होगा, they are motile. They are motile because they show amoeboid movements. ये amoeboid movement दिखाएंगे जिसकी वजह से ये क्या होंगे, motile. They are morphologically similar. Means their morphology, if we see their morphology, that will be similar. But if you look at their physiological appearance, that's dissimilar. इनकी ये जो physiology होगी, that is dissimilar. Mostly it's found in order Conjugales. Another point is that in freshwater algae, the sexual reproduction is by means of pollination. ये जो freshwater के algae होते हैं, के पास ये जो sexual reproduction is good type of reproduction in these freshwater algae because it is in the it's followed by the thick wall around the zygote. Suppose this is zygote
and this zygote is enveloped by this thick wall. This thick wall help in to complete the period of perennation. PERENNATI1. This thick wall help these freshwater alga to cope with this adverse condition. जब कभी adverse condition होती हैं या unfavorable condition होती हैं उसके दौरान इन्हें ये जो period of suspend में रखते हैं, that is this perennation is due to this thick wall. Here is example, you can clearly see here conjugation. इनके पास flagella नहीं है but ये move हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, that is they show amoeboid movements. Is it? This was whole about the reproduction in alga.